It's not that I'm an inconsistent person, it's just that I have like so many ideas, so many things happening at the same time कि हर चीज़ को prioritize करना, it's not as straightforward as it used to be. Now, you could argue कि I can manifest it to be that way. You're right, I can, but I don't want to, because I don't want to control every aspect of my life consciously. Some things are better off where I'm unconscious, okay? However, things that I do want to change, जिन चीज़ों में मुझे एक्चुअली में मज़ा आता है, इन्जॉय करती हूँ उन चीज़ों को कॉन्शियसली हैक करने में, अपनी लाइफ को ईजी बनाने में, वो चीज़ पे मैं आई डू वर्क. I never skip my routines. I never skip my I don't joke about my discipline when it comes to aligning my thoughts. तो इसलिए at a time I typically prefer कि मैं 3 से 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करके डिसिप्लिन्ड तरीके से कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करूँ at one time, at a given time, because or any more than that it can get like a little chaotic, because as I told you, my routines are disciplined. मुझे वेवर करना पसंद नहीं है, because I've spent a lot of time wavering back and forth. Like for example, trying to manifest a certain income, उसके अंदर affirm करना, persist करना initially easy लगता है, लेकिन जब results नहीं आते ना, तब दिल चाहता है छोड़ दो सब, कोई फ़ायदा नहीं है. और इससे I think you can relate as well. तो randomly affirm करना, compared to that, it's better if when I have a routine, like मैंने time set किया है, every hour, every 3 hours, every 2 hours, whatever, that's mine, whatever works around my schedule. So that's how I think typically you should also schedule your routines based on your own schedule. What am I saying? Schedule. Anyway, जब आप ego से identify नहीं करते ना कि this is something that I will, like I'm not saying determination को मैं ego नहीं कह रही, पर एक, और मैं जिद को भी ego नहीं कह रही. ईगो मैं इस चीज़ को कह रही हूँ जो जजमेंट होती है, अपने आप को जो हम जज करते हैं, वो ईगो होता है, राइट? वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, वो नेगेटिवली भी हो सकता है. इट्स लाइक अगर हम आइडेंटिफाई करें ना कि हमारी जो भी वर्थ है, हम जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं दुनिया में, या कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है. लाइक इट्स, वी डोंट ओन इट, वी लाइक अ वेसल. अगर हम इस तरीके से सोचें ना, तो हम ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे. और हम as human beings, we are going to fall into the trap of ego. Like it's unavoidable, because हम डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं कि हम जजमेंट में आ ही जाएंगे. We are going to judge ourselves, and we're going to judge others. Like I know that for a fact that even if I'm absolutely conscious about my thoughts, I will still judge someone, even if I don't want to. Now, whether I act on that judgment or not, that's where, discernment comes into place. अच्छा, इन रैंडम चीज़ों को साइड पे रखते हैं. मेरा पॉइंट ये था, इस वीडियो का जो आइडिया है वो ये एक्सप्लोर करना है. So my videos are never going to be about conclusions. Maybe sometimes they are. I don't know. Like I cannot define it, right? But I don't think कि अगर कोई चीज़ conclusion पे end हो रही है, तो it's not like you're learning anything from it, I'm learning anything from it. It's just, it's fact, right? If you want facts, just Google anyone who's giving you facts on manifestation. Go ahead, do it. This place I want to like explore questions जो मुझे खुद भी आते हैं अंदर ना, because I'm also learning alongside. I do coach people, but I also I'm learning myself based on my own experiences, new insights from God. So something that I was thinking about was discipline when it comes to, identities. Like हम जैसे identity में shift कर लिया, for example, affirm कर लिया, सब कर रहे हैं, तो हम उस identity के साथ association build करते हैं. तो फिर जैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, हमारा दिल चाहता है कुछ और मिल जाए. तो initially पहले मैं ऐसा सोचती थी कि this is kind of like a lack of gratitude, where we are like, wanting more and more and more. And when I say initially, I mean like 5-7 years ago, not anymore. But I feel like now at this point, जब भी हम कोई चीज़ नया milestone attain करते हैं ना, तो हमारा, like I have shared before in one of my previous videos, कि हम जब एक certain milestone achieve करते हैं, तो हम एक नई identity में shift हो जाते हैं. और जब हम नई आइडेंटिटी में शिफ्ट हो चुके होते हैं, तो हमारे जो opportunities to evolve further वो और enhance हो जाती है. तो every time you get what you want and then you want something new, it's not really about a lack of gratitude. It's not about shame. कि oh my god, aren't you happy with what you have? Like, yeah, bro, sis, whoever you are, I'm happy with what I have. I'm grateful, I'm content, and I want more. Why is that a bad thing? Why should I be shamed for wanting more? And
this is where most people fall into the trap of shame and guilt. And when I say most people, I'm actually talking about people that I've worked with. Now, there could be exceptions. Of course, I can change the way the world operates and everything else gonna, follow suit. But right now, let's not get into nuances, okay? I'm actually hoping this video reaches someone who's thinking about these things at the same, right now, along the way that I am. Anyway, so when my God isn't shaming me for asking him for the infinite, why should your, and when I say your, I don't mean you, I mean the person who's limiting me, why should your limited brain, limited mindset, limited perception of the world dictate my ability to receive my blessings? If you want to have a limited mindset, you're free to do so. Go ahead. Limit yourself. But my God hasn't put any kind of limit on anything, especially on thoughts. There is no tax on thoughts. If anything, if you think big, if you think good, if you think pure, you're actually going to get rewarded on thought, but you're never going to be penalized on a bad thought, which is why when a bad thought comes, let it go. Don't identify with it. Let it go. Okay? Don't stress too much about it. So the shame that comes with wanting more. Let's think about this. Why do we feel the guilt? God calls himself Yahweh, right? Yahweh is someone who gives endlessly, who blesses you without reason. That definition of God, someone who gifts you without a limit. That if that's the God you believe in, that's the kind of relationship you're gonna have with him. मतलब अल्लाह के साथ वही relationship होगी ना आपकी, जैसा आप assume करोगे जो अल्लाह अपने बारे में कहते हैं कि मैं वही हूँ जैसा assume करो. Okay, so अगर आपके पास ये ability है कि आप अल्लाह को ऐसे अलग से रिलेशनशिप कैसी हो सकती है जहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि अल्लाह इज द काइंड ऑफ गॉड जो आपको हर नेमत देगा, ब्लेस करेगा विदाउट एनी कंडीशन. Why would you choose the version where God will only give you something when you earn it? And वो वाली स्टेट आप क्यों चूज करोगे जहाँ पर आपको पहले अपने आप की वर्थ बढ़ानी होगी, फिर अर्न करना होगा गॉड का प्लेजर? इतनी कंडीशन क्यों है यहाँ पर? इसलिए तो हम रिलेशनशिप्स में इतनी कंडीशन लगाते हैं, इतने फियर के साथ रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं. अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, चाहे वर्क हो, चाहे कोई भी कमिटमेंट हम करते हैं, अगर वो फियर बेस्ड है, इट्स लाइकली द रीजन इज मोस्ट प्रॉबेबली कि आपकी रिलेशनशिप विद योर क्रिएटर और whatever you believe in, the higher power, उसमें ना fear embodied है. There's shame there. A shame is one of the lowest frequencies that you could be in. और shame में जब हम ट्रैप हो जाते हैं वो एक मैग्नेट की तरह होता है. shame की अपनी ग्रेविटी होती है. आप shame से अट्रैक्ट होकर ना वहाँ ट्रैप हो जाते हो और आपके इर्द गिर्द एक shame की ना समझो एक एनर्जी रेडिएट होती है सिंपली. तो उसका हम क्या करें? वो दूसरे लोगों को भी बाय द वे कंटेजियस होता है, ये फैलता है. shame एक लो क्वालिटी इमोशन है, ये स्प्रेड होता है, कंटेजियस होता है. तो अगर आपको आपकी लाइफ में कोई मिल रहा है बंदा या बंदी जो शेम में ऑपरेट करता है, जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ गिल्ट में रहता है, तो या तो उससे दूर हो जाओ, या फिर इफ यू लव देम वेरी मच, हेल्प देम गेट आउट ऑफ दैट फंक. बिकॉज शेम तो रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, शेम नहीं होनी चाहिए, लव होना चाहिए. लव क्या मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश है, एलिवेशन की गुंजाइश है. देयर इज रूम टू ग्रो. सही है. तो when growth का मतलब है increment, right? in a good way, truth basically. तो हम unseen world में एक unseen world exist करता है, एक seen world है. तो हम जब grow करते हैं तो we get closer and closer to the unseen. but उसकी लिमिट वही है जो अल्लाह ने लगाई हुई है, जितना वो चाहते हैं हमें पता चलेगा. लेकिन हम क्यों वो लिमिट लगा रहे हैं? हम तो अपना ढूंढ सकते हैं ना, हम तो चाह सकते हैं ना. we can want. अल्लाह ने हमें हमारे ऊपर लिमिट तो नहीं लगाई ना कि don't want more. in fact if anything he said कि he's already given us everything. तो जब अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हम अपने ऊपर लिमिट क्यों लगा रहे हैं कि हम ये नहीं चाह सकते, हम ये नहीं, we cannot want this, we cannot ask for this, it's shameful. Why? Think about it. It's a question, okay? I'm not going to give you any answer because you and I, we share the same soul. We're connected. Wherever you are in whichever part of the world you're in, you and I are connected. So yeah, I'm asking you this question. Why are you so scared of wanting more? It's not about actions at all. It's about first giving yourself the permission to ask for more without shame, without that brown auntie or uncle telling you, we didn't get it, so you should neither. By the way,
a lot of these in I don't know, like बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे है भी नहीं जो अपने बच्चों को लिमिट कर रहे हो, लेकिन होते भी हैं. बट whatever. आप एक आपकी एजेंसी है, आप एक इंसान हो, अल्लाह ने आपको इंडिपेंडेंट पैदा किया है, तो खुद सोचो ना, क्यों वेट करो किसी के वैलिडेशन का? Why are you waiting for someone to validate your thinking, validate your desires, validate your duas? Why are you letting that person tell you that you should only ask God, you know, if it's good for you? What do you mean by that? If it's not good for you, you shouldn't ask God? What does that even mean? Like, if I'm asking God for something, या फिर मैं अपनी दुआ या डिज़ायर एक्सप्रेस कर रही हूँ, मुझे पता है I want this, why would I assume that it's not good for me? Why would I assume that? अब यहाँ पर लोग वाली वर्स ले आते हैं कि something is good for you, you might like it but it's not good for you. मैं मीनिंग बता रही हूँ, but you might like something but it might not be good for you. वो वर्स एक कॉन्टेक्स्ट में रिवील हुई हुई है, वो जिहाद के बारे में बात हो रही है वहाँ पर, उसको आप गौर से पढ़ सकते हो. बट अल्लाह ने हमारे पर लिमिट नहीं लगाई है. कोई गॉड का कॉन्सेप्ट लिमिट के साथ कोई एग्जिस्ट नहीं करता. गॉड इज नॉट लिमिटेड. यस, human beings by design are limited, but God hasn't limited our thinking. Actions में there are rules, yes, ठीक है, बहुत clear rules हैं, पर आपके thought पे कोई rules नहीं है, तो वहाँ पर क्यों limit था? वहाँ पर क्यों shame है? वहाँ पर क्यों इतनी judgment है? वहाँ क्यों ego अपने throne पे बैठ के आपको judge कर रहा है कि how dare you want more? अगर ये आपके साथ resonate नहीं कर रहा, it's okay. You don't have to ask yourself anything. But if it does, I would like to, encourage you to ask this question. What are you so ashamed of? हम चाहे जितना भी इवॉल्व हो जाए, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें होल्ड बैक कर रही होती हैं. तो what's holding you back from wanting more? Do you think that it's noble to feel pain in this life so that you can get a better afterlife? Is that it? कहीं लिखा हुआ है कि दुनिया में नाखुश रहो ताकि बाहर आखिरत में बहुत नेमते मिले? दुनिया और आखिर दोनों में अच्छा नहीं हो सकता? अल्लाह से, अपने गॉड से इतनी छोटी उम्मीद क्यों की हुई है? खैर, ये मैं अपने आप से भी पूछती हूँ. एक्चुअली आई ask myself this question all the time, these questions all the time. I journal on them, I think about them, and I would like for you to answer them for yourself, or at least ask them. Okay? All right. If you have any questions, feedback, share them down below. Like it if you liked the video, if you liked it. Actually, if you liked it. And yeah, sure, subscribe if this resonates with you. All right. See you in the next video. Bye.